देता हूं मैं आपको जो बहुत हमारी डिस्कशन के लिए वैलिड है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कुटुंब. आई डिड अ वेरी गुड रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन देम ऑन लिंक्डइन. कुटुंब इट्स अ कम्युनिटी ऐप जो आई थिंक टेम्पल डोनेशंस वगैरह फैसिलिटेट करती है इन इंडिया ऑनलाइन. आप किसी मंदिर में जाके दान कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर लेते हैं, राइट. They have been massively funded. They are valued at over 1000 crore. करीब $30 million इतना भी होता है. I think 250 करोड़ रुपए होता है. They have raised 250 crores, 30 million. Now this might come as a shock to me also. मैं 10 बार ही चेक करा ROC की वेबसाइट पे. FY22 का उनका रेवेन्यू 8,000 रुपए था. 8,000 rupees. हैव यू हर्ड ऑफ द फंडिंग विंटर? आज हम बात कर रहे हैं टू समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक. हम स्टार्ट करेंगे विद अ शॉर्ट मास्टर क्लास ऑन रेजिंग फंड्स इन दिस फंडिंग विंटर. वी टॉक अबाउट स्टार्टअप फ्रॉड, थेरानोस, FTX से लेकर गो मैकेनिक तक इंडिया में भी. विल टॉक अबाउट हाउ एंड वाई टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेसेस. वी आर टॉकिंग टू अमित गुप्ता. वो एक सीजन एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, स्टार्टअप एडवाइजर है, and he is a partner at Factorial. Now, this is the longest episode that I have recorded so far, and a brilliant one. We shot way past our recording schedules. अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड का पार्ट हो in any way, ये सबसे पावर पैक्ड डिस्कशन है that you will come across. एंड तक देखो and let me know what you agree or you disagree with. Hi Amit, welcome to the podcast. Thanks, Pradesh. Good to be here. Thanks for having me and inviting me. So Amit, to start with now, I want to model the first 15 minutes as a masterclass on fundraising, especially in the phase of जो अभी funding winter चल रहा है पूरा. And how do you advise? Say, a lot of founders are there right now जो ढूंढ रहे हैं कि कैसे navigate करें इस time को. How would you advise these founders to navigate these times? So yeah. Thanks again, Pritesh. I don't know if it will be a masterclass or not, but मैं पूरी कोशिश करूँगा that I can give based on my experience and what I do for a living day in, day out, having been doing this for almost 10 years, as you introduced me earlier. So, I'd like to go back to how we arrived at the funding winter, what are startups and all, so it gives more context. कि हम यहाँ पहुँचे कैसे? Why are we in a hot country like India? Why are we in a funding winter, or globally also, right? So now, I'll keep my why very short and succinct in terms of now startups, you see, by definition or by convention have generally been, called as technology companies now, as is the convention since last 15-20 years, and we followed Silicon Valley and China and other mature ecosystems. Now, a startup is something which causes large scale disruption, is easy to scale, and is also technology enabled. So that's the VC conventional definition of a startup. Okay. Now, with that assumption, how did we land in the funding winter? Now, during COVID, of course, it was a very painful period for everybody globally, especially, and in India, let's say, when our Prime Minister, Honorable Prime Minister, announced the closure, nobody expected it to last for the time that it lasted, including total closures, right? What happened with that is everybody was forced to go online, and rapid adoption of technology. We were basically doing everything on our mobile screens or computer screens, right? We were forced to everything, buying groceries, medicines, doctor appointments, meetings, work meeting, everything was online. Now what happened because of that? A lot of innovation was also required in services which were prior to that period offline, right? For example, doctor appointments, buying medicines, many other things which require a touch and feel or a personal experience. But everybody was forced to go. Now, all this activity required innovation. Innovation required funding, right? And all these startups that are defined as startup, and technology is something that you can leverage to scale and reach a mass. You can't do it with conventional companies. Now, innovation required funding. Of course, funding was available, it always is, and a lot of money started pumping in. See, in any economy or economics,
it's always a game of demand and supply, right? Now the demand for capital, you know, was just too much at that point. Supply was limited. Having said that, people were innovating, but still, I mean, there were a limited number of people who were ready to, ready for the challenge of creating innovative solutions across sectors, across needs. Uh, because the demand was so heavy, investors started pouring in lots and lots of money at very unrealistic valuations, right? Because it was kind of a FOMO. You know, I mean, in the VC startup ecosystem, we like these acronyms: unicorn, funding winter, FOMO, the fear of missing out. No VC. VC inherently is a very risky game. Now they wanted to get on the bandwagon and start funding these companies. And that's why we had these irrational valuations, irrational fundings. If somebody needed $1 million, they were getting $10 million, and it was happening globally. But of course, in India, our ecosystem is not mature. Now, COVID, you have to understand, is a black swan event. Black swan events generally don't last forever, like the financial crisis or the recession. Go back in history, 1920s depression in the US. They generally last for maximum 2 3 years, and it dies down, which happened, right? Now, when it happened, which has happened over the last 12 to 15 to 18 months, now people started going back to their normal lives, which is an offline world or an omni-channel world. It is not that somebody who was forced to go online is staying online. Uh, so now we have a situation where the supply is extra of all these companies, all these innovations, and the demand is not there. Now, demand is not there in terms of users who are using these services and paying for that. And globally, because of geopolitical tensions and everything, the war in Ukraine and other things, there is a recession or recessionary trends. Interest rates have gone up, and that's why VC capital, VC funding started drying up, which is what is called a funding winter, right? The winter is theoretically when everybody goes into hibernation mode. Like in many cultures, animals go there, they dig burrows deep under the ground, and humans itself prepare for a funding winter. I mean, we have this famous series, Game of Thrones, where they, always say winter is coming, and they prepare for it. But unfortunately, here, not enough preparation was done. So you see a lot of things in terms of mass layoffs, and uh, also these startups, especially in India, they have been dependent on OPM, which is other people's money. It's very addictive, like opium, the drug, right? And these businesses were not sustainable in terms of being, self-sustainable on their own revenues or profits. Forget profits. Nobody makes profits in VC funding companies in India. Maybe because we're not mature, or maybe because everybody followed a wrong model of deep discounting. So now to come straight away, it was very important, since you defined this as a masterclass, which I don't necessarily see it, more informational, right? Uh, how do people now, funding winter is something where funds have dried up globally. You have to understand venture capital comes from other funds, which are limited partner funds, which raise capital from public pension funds globally, sovereign wealth funds, and so on and so forth. Ultimately, it is public money. That money is being invested elsewhere because of interest rates going up, right? Now, when that has happened, VC, because inherently it is a risky business, they have pulled back, right? They have pulled back. They don't want to invest in risky ventures. And also, there was a lot of hype because of the whole technology adoption, exacerbation around Web3, metaverse, NFTs, and all that, which was, again, those were fads. Those were not utility technologies for public at scale. That FOMO died down. We have now, how do a lot of companies, this is a painful process, by the way, a very painful process, especially for startups who are used to external capital, right? And now everybody started talking of sustainable ventures, or how to run a company sustainably, and in terms of focus on revenues, cut down your cash burn, unit economics, be EBITDA kind of positive, at least kind of, even if it is in low single digits. Everybody has focus, right?
before we talk about say how to navigate these times, it's interesting that you mentioned ना कि Web3 था, बहुत सारा hype बना Web3 के around, बहुत सारा external money pump हुआ, and people are not prepared. I want to understand the why, and not just from a say startup ecosystem point of view, जहाँ पे बहुत सारी startups point of view जहाँ पे startups prepare नहीं कर पाए, but also VCs were not prepared, right? They're pumping money into ecosystems that probably did not thrive at when they मतलब got hit the first time itself, ठीक है? और second is मतलब where did the world miss out? मतलब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार there was a wave Right. and people were money. I mean, we've seen it with Y2K in year 2000. Probably you were much younger at that point, but I'm sure you're aware of it, right? There was this whole Y2K adoption, and then there was a dot-com bust also, because every business essentially was putting dot-com in their business, and the bubble burst, right? Again, now VCs are also humans, you have to understand, and it's a very risky business. VCs are not in the business of running or planning a business or forecasting. I mean, they have their data. They bet on entrepreneurs to, leverage technology or to scale up any idea to a problem, based solution. Now, when you say why did nobody see it coming, there is no one specific answer to that. Humans, we like to follow the herd, right? Everybody is following the herd. That's why you have a fear of missing out. Now, if 10 people, very named large VCs, invest in a certain technology, like for example, it is happening with AI at the moment, generative AI to be specific, with what happened with ChatGPT, right? We are seeing a return of the same thing. But the difference here is all these technologies, Web3, Metaverse, NFT, and many others, now they don't have the impact on human civilization and society on a day-to-day level, right? These are add-on features that you can build. If metaverse doesn't exist, my life is not going to stop. It's not going to make me a difference. I have no utility for NFT. When I say I speak for a very large majority, right? These are fad-based technologies. They thought there was going to be adoption, including the largest of companies like Facebook, Google, Microsoft, right? They've all issued statements where they said that we have miscalculated while laying off. They've all the CEOs, whether it is Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, or Satya Nadella, they've all admitted that they made mistakes. As simple as that. And then we have fiascos like, so it's not only Web3 and all that stuff. We have fiascos like FTX, which happened for various reasons. There was not enough due diligence done. It looked like a scalable thing, and then recently we've had crashes like the Silicon Valley Bank, and a general recession because of inflation, and everything boils down together. That's why we are in funding winter. So why VCs did not do it, there is no one set answer. Having said that, yes, they have been successful investments also. We can't say that it's a risk without diligence. No. It's not like a casino as most people think. It's not a lottery system. Even though the nature of VC investing is such, they follow a thing called Pareto principle, 80-20 principle, where 80% of their investments are bound to fail or not do well. Right? Only 20% investments give the returns, effective returns, for the entire 100% portfolio. Case in point is SoftBank. Over the last 10, 12 years, they've been very aggressive in funding in India, globally. None of them have worked out, but they have one particular investment, which historically is the most successful investment in Alibaba, right? SoftBank invested in Alibaba at some point in the early 2000s. It gave them a 4,500% return. A 20 million investment became 100 and something billion, right? At that point when Alibaba IPO'd. So, that took care of all their other losses. So coming back to, I think मतलब मैं जितना समझ पाता हूँ इंडस्ट्री को, आई फॉलो द इंडस्ट्री वेरी closely globally. I have friends across the ecosystem in the Silicon Valley, in India, who are mature, veteran kind of investors who have been doing this for 20, 30 years. So I know, right? No investor likes to invest something knowing it will fail. No entrepreneur starts a business with the assumption that I will fail, right? Everybody's intention is correct.
right? No, nobody wants to fail. Why would they want to do it? Investor invests in 100 companies, they want all 100 to succeed. बट ऐसा नहीं होता है, राइट? हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इट्स कॉल्ड वेंचर कैपिटल एंड नॉट banks don't fund this kind of a business, or other institutional investors, traditional investors don't fund this business. Why do they do it? Because the returns can be exponential as opposed to traditional instruments like bank deposits or government bonds and so on and so forth, right? Risky but high return. So I think मैं पूरी कोशिश करिए आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए. इफ यू वांट, कैन वी मूव ऑन टू नाउ द Yeah, फंड? I think, matlab, now we are said that there is a funding winter here. Mistakes were made, and some mistakes can't be undone. Now, how राइट. do we navigate this? Not just from a like we हाँ. talked about from the VC ecosystem, but particularly from a founder ecosystem. Because what has happened that a lot of founders have inflated valuations now, right? And they're not able to raise on those valuations anymore. A lot of new founders have been a wave of new founders entered the whole startup ecosystem, right? And there are a lot of euphoria around the startup ecosystem, which has sort of started to settle down now. How do you think founders should pick up from here? So yeah, very good question, Pritesh. How do they navigate this? First, we have to see what kind of founders are there, what stage of the companies they are at, right? Uh, I'm taking the assumption that not founders who have founded in the last 1 or 2 years, but who've been in the game, let's say over the last 5 years, who went through the COVID crisis, saw exponential growth. Now, when I say growth, it doesn't necessarily mean revenues, right? Growth can come from users, especially in India. Why? Also, I'd like to highlight one point why we've landed in this situation. Everybody miscalculated the TAM, the total size of the market, which is another acronym as we all like. The total addressable market. Let's say in the internet space, we talk about 1.4, 1.5 billion. We're the highest population now. By the way, congratulations, we're number one in something, right? But this billion number is not the TAM for internet e-commerce or internet technology or any technology users which can be paid for. I have data which suggests historical data over the last 10, 15 years. Oldest companies like Flipkart and Amazon in India, or Zomato, Swiggy, uh, the base is 120 million users who are actually using online services and paying for them. Now, out of that 120 million, only 40 to 50 million across India are monetizable users who are repeat customers and paying customers, right? There is data. Bloom Ventures in Bangalore published an Indus Valley report which has all this data. I've published it myself with my commentary on LinkedIn. And so that is why now all these startups, when they make their projections and based on which they are valued, are essentially a hockey stick kind of a growth, right? It's very easy to make those Excel sheets and PowerPoint presentations, but the reality is it's not happening. It's growing at healthy 10-15% year on year, right? And with our population, every year we keep adding a few million, 10, 20 million, but it's not necessary they're all paying users, right? So how do founders navigate this situation now? There is no rocket science as everybody thinks currently, and the whole focus has gone on profitability, revenues, unit economics. Number one, reduce your cash burn. If you have only 40, 50 million targeted customers in India, these are the who are repeat users. These are the people who can pay. I am one of them. I pay for all my services. I pay all my monthly subscriptions for news media because I research a lot. I order Swiggy, Zomato multiple times a day or a week. I'm a foodie, a disclaimer, and so on and so forth, right? I pay for a lot of my services. And whether there is a discount or not, I like discounts. It gives me a dopamine rush like everybody. Even it is 5 rupees, I'm very happy that I got 5 rupees off. I gamed the system. I will compare deals on a Swiggy and a Zomato, Ola and an Uber, and but even if the discount was not there, I am willing to pay. So, how do you reduce your cash burn for all these startups? Stop the deep discounting, high customer acquisition model. We have this thing called
CAC, right, which is a customer acquisition cost. In India, they've been high, like I mean, they're just through the roof. Flipkart, when they started, had a 1800 rupee per customer acquisition cost with a lifetime value LTV of barely 1000. I think the numbers might have come down, but the LTV is still the same, right? So the LTV CAC ratio has to be proportionate. Number two, cost cutting. How can they do? Many of them knee jerk reaction is that they've resorted to laying off employees, which is the first easiest low hanging fruit, right? Just lay off people. Major companies across the world, Meta, Facebook, Insta, Microsoft, Google, everybody has done that. Markets are very happy. But we are talking of essentially early to mid to even late stage startups, 50 to 100 people, maybe 200 people, right? Now, when they start laying off people, it will affect their business functions. Who is going to run the business and what functions? So you can't just lay off randomly that I have 200 employees, okay, 50 people have to go. Cut your costs, reduce. So a way to not reduce the headcount or lay off employees is cut down their salaries, work with them, establish relationships with your people, and tell them, guys, we are going through a tough period. We are in it together, and we'll come out of it, right? Founders itself have to be stop being greedy. I know it's a very loud statement. Founders have been greedy in India, right? Across many things, including taking big paychecks, including taking a lot of money on secondary sales of shares, and so on and so forth, right? I mean, I won't name names, but there are several of them, including a very brash ex-founder of a large fintech who says every founder should take 70-80% of every secondary sale, right? Everybody knows him from his appearance at Shark Tank, but I would not name him, okay? People can make an inference anyhow. So you have to reduce your expenses on multiple fronts, and that's how you will be able to focus on your unit economics. अब ये unit economics क्या होता है कि आप अगर unit economics है 10 रुपए की कोई चीज है, आपको 15 रुपए में बेचनी है, 2-3 रुपए उसमें से खर्चा लगा के 2 रुपए घर लेके जाना है, करेक्ट? तो वो लोग ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 10 रुपए की जो चीज है वो अल्टीमेटली बेच ही आप 5 रुपए में रहे हो, उसके ऊपर 5 रुपए का खर्चा लगा रहे हो, तो आपकी 10 रुपए की चीज -10 आ गई आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में, राइट? वो धंधा ऐसे नहीं चलता है, हिस्टोरिकली सस्टेनेबल नहीं है वो. Customers are willing to pay. Why will they not pay? We have a huge, even the number I give you 100 million, but उसके अलावा और इतने सारे मिलियन बिलियन लोग हैं, they are willing to pay if they have a need. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 4 दिन पहले I was doing something midnight, very late night, 2:33 a.m. I was talking to a founder based in Vancouver, Canada. He's an Indian founder but visiting Vancouver. We were discussing some things, and I decided not to sleep for some time, but I needed some essentials. Again, disclaimer, I'm sorry, people. I mean, I'm a smoker, so I had to order some cigarettes and also some coffee and some mosquito repellent. I went on my app of Swiggy Instamart and I ordered it at 2-3 a.m. and there was some store willing to deliver it in 5-10 minutes to me. Of course, they charged a convenience fee, a delivery charge, and a late night surcharge. I actually didn't pay it because I have a membership, but they charged that fee, right? Even if they would have asked me something extra, 50-100 rupees, I would have paid, right? So they don't need to discount me, right? Why? And I'm sure I was not the only zombie kind of a person at 2:33 a.m. ordering. There must be more, and that's why that service exists. So deep discounting की जरूरत नहीं है. Amit, I just want to quickly ask you another question here. So why do you think a lot of these founders, a lot of companies go in for deep discount? I'll give you an example right now. For example, जो अभी big baskets का जो whole fiasco चल रहा है, where they are saying कि we'll charge extra money for deliveries and all of that, and there was a huge backlash, and there were so many इतना सारा social media पे tweets थे कि why is big basket now charging another extra 10 rupees for Blinkit. You mean Blinkit, by the way? It's not Big Basket, it's Blinkit. sorry. Huh. Basket all the time. I've been a big basket user for a long time now. It just changed to Blinkit. They should be happy. They should be happy they've made a brand and a legacy.
Yep. So why do you think ये पूरा जो deep discounting का जो whole system है that got built in the startup ecosystem for the last many years now, it's not Okay, so you said this शुरू से चला आ रहा है. हाँ, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, जो मैंने रात को 2 ढाई बजे 3 बजे ऑर्डर करा, एंड आई एम विलिंग टू पे, एंड आई ऑर्डर मल्टीपल टाइम्स अ डे फॉर वेरियस रीजंस. आई एम अ बिग फूडी, आई हैव नीड्स फॉर कन्वीनियंस, मैं आई वर्क फ्रॉम होम, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय 15-20 मिनट्स गोइंग आउट, सो आई ऑर्डर anything from a little pin to a computer online, and I'm willing to pay for all these services, and I'm sure there are other people like me who are willing to pay. We don't need to be discounted, right? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10-15 रुपए में. Of course पड़ता है फर्क on a long run, but still. So why do they do this? Because they found this the easiest way to capture customers. लेकिन जब अब मैंने टाइम की जो बात करी वो बहुत जरूरी है. टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कस्टमर्स ही 100 मिलियन है, 120, या मैं कहता हूं चलो 150 मिलियन है. आप उनको डिस्काउंट क्यों कर रहे हो? वो बढ़ेंगे नहीं डिस्काउंट की वजह से, वो है ही नहीं. बीइंग डिजिटल, हैविंग अ स्मार्टफोन विद अ tier 3 सिटी और अ रूरल विलेजर डजंट मीन दैट ही विल शॉप क्योंकि उसको 10 रुपए मिल रहे हैं. उसकी बाइंग प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसको कहीं फिजिकली जाके लेना है, देखना है, यूटिलिटी देखनी है. अब एक रूरल कस्टमर अगर गाड़ी खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, वो जाके खरीदता है, ऑनलाइन नहीं खरीदेगा. कोई भी चीज हो, कपड़े हो, उसके लिए वो 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसको श्योर होना है, जो ऑनलाइन नहीं हो सकता. इसीलिए कर रहे हैं वो लोग इतने सालों से. अब और ये फंडिंग हो रही थी, वीसी फंडिंग, जब पैसा खत्म हो गया तो वीसी फंडिंग दे रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? वीसी फंडिंग खत्म होती जा रही है, हो गई है खत्म, प्रेशर आ गया है. तो अब ये बहुत गलत स्टेटमेंट थी, और एक बहुत अच्छे फाउंडर इंडिया में, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे, जैसे आपने कहा, ही जॉइंड द ट्विटर डिबेट और द लिंक्डइन डिबेट, ब्लेमिंग द कंज्यूमर्स कि वो 10 रुपए देने को तैयार नहीं है, which is wrong. And I invite him to a debate with me. He knows who he is. Most people know. I commented on his post also. I mean, 10 रुपए कंज्यूमर क्यों नहीं देगा? मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं 50 रुपए दिए डिलीवरी के, राइट? आप कंज्यूमर को ब्लेम नहीं कर सकते. आप अपने आप को ब्लेम करिए कि आपने टाइम ही गलत कर लिया. आप सोच रहे हैं कि 1 बिलियन 100 करोड़ जनता हमारी शॉपिंग करेगी ऑनलाइन. जरूरी नहीं है. ये इंडिया मॉडल, इंडिया ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंटरनेट ई कॉमर्स से नहीं आने वाली है. इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है, राइट? आई मीन आवर ग्रोथ कम्स फ्रॉम मेनी एरिया. तो ये रीजन है टू आंसर योर क्वेश्चन. सबने गलत एस्टिमेट ले लिया, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट. Consumer will pay if there is a need. If you have built a solution around that need, consumer will pay, and you have to make them into the habit of paying. अभी क्या हो गया, सबको आदत पड़ गई है डिस्काउंट की. मैं खुद हूं उसमें से एक. मैं स्विगी जोमेटो पे कंपेयर करूंगा किसी चीज को, जहां मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है मैं वहां से ले लूंगा. बट मैं ज्यादातर ये नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि वो क्या है. रेस्टोरेंट की प्राइस में ही फैक्टर्ड होती है डिस्काउंटिंग. बाय द वे, अब ये क्विक कॉमर्स वाले, ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स साइट है, ये बहुत ही गलत अजम्पशन ली है उन्होंने. अब वो किसी चीज को वो एमआरपी पे बेचते हैं. 100 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, एमआरपी पे है, उनको 100 रुपए का नहीं पड़ा, उनको जो भी उनका मार्जिन निकाल के 85-90 का पड़ा, वो 10 रुपए भी उनकी जेब में जा रहे हैं. सो व्हाई कांट यू टेक योर प्रॉफिट्स एंड योर कॉस्ट फ्रॉम दैट 10-15 रुपी मार्जिन? Why do you need to burden the consumer if you have to go to scale? अभी 4 दिन पहले स्विगी ने एक 2 रुपए प्लेटफॉर्म फी लगा दिया. आई डोंट नो व्हाट इज दैट 2 रुपए. सबको लगेगा 2 रुपए है, कर लो, बट दैट 2 रुपए ट्रांसलेट्स इनटू 100 करोड़. आई हैव डन द मैथ्स ऑफ रेवेन्यू. सब कुछ आप कस्टमर पे बर्डन नहीं डाल सकते हो. ऑनलाइन का मतलब, जब ये शुरू हुआ था अमेजॉन, अलीबाबा दुनिया में, ऑनलाइन का मतलब था कि आपके ओवरहेड चार्जेस कम हो चुके हैं, आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, वेयर हाउसिंग नीड्स बहुत कम है, आपकी रिटेल शॉप नहीं खोली है जिसका रेंटल है या स्टाफ है, राइट? तो वो 30-40% कॉस्ट तो आपकी वहीं पर कम हो गई है एक प्रोडक्ट की. आप क्यों दे रहे हो डिस्काउंट? किसने बोला डिस्काउंट? कस्टमर ने नहीं मांगा. कस्टमर अगर शॉपिंग ऑफलाइन कर रहा है तो वो फुल प्राइस दे रहा है ना. तो वो ऑनलाइन आप अपना 10-15% एफिशिएंट मार्जिन में से ही दे दो ना उसको. 1000 रुपए की चीज आप 900 में बेच सकते हो. ये थोड़ी कि आप 1000 रुपए की चीज 400 में बेचो. क्यों? किसने बोला है? किसी कंज्यूमर ने नहीं बोला है. तो इसीलिए हम इस स्टेज में पहुंचे. कमिंग बैक, प्रीतेश, वो क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं. 5 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. कट योर कॉस्ट बर्न्स, डोंट डीप डिस्काउंट. Cut costs in terms of your employees by not cutting the employees but their salaries. Work with them. Focus on number 3. Focus on unit economics. Right?
वही एग्जाम्पल है, 10 रुपए की चीज 15 में बेचिए आप और 2 रुपए घर लेके जाइए। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट डिपेंड ऑन वीसी कैपिटल। ये जो चीज है, अगर 2-3 साल लगे यहां पहुंचने में, 2-3 साल लगेंगे इससे बाहर जाने में, या हम हो सकता है कभी भी ना जाए। ये फंडिंग विंटर, मैं इसको बोलता हूं न्यू नॉर्मल, विच इज वेरी गुड, ताकि सबको एक्सटर्नल कैपिटल की आदत से बाहर निकलना पड़े, राइट। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, प्लीज डोंट चेज वैल्यूएशन, chase value creation, right? You do not need to build the next Apple or Amazon or whatever, Google, right? आप 50-100 करोड़ का धंधा भी अगर अच्छे से कर सकते हैं, या वॉट एवर अमाउंट 10 करोड़ भी कर सकते हैं, बट उसमें से एबिटा पॉजिटिव हुई है, क्रिएट रियल वैल्यू फॉर योर एम्प्लॉइज, फॉर योर इन्वेस्टर्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टर की 9 इन्वेस्टमेंट 10 में से फेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 6 तो चलनी चाहिए। अभी तो 1 या 2 चलती है, क्यों होता है ये? अब क्या हो गया है, 70% ऑफ स्टार्टअप्स आर अंडर प्रेशर कि वो सस्टेन कैसे करें, अपनी सैलरी कहां से दे, एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से दे, तो क्या होगा उससे? और डिमांड तो वही की वही है, डिमांड तो गिर गई है, राइट, ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। अब डिमांड गिर गई है तो दे कैन नॉट सस्टेन। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रीतिश, अभी हमने देखा है इंडियन इकोसिस्टम में, ग्लोबली भी हुआ है, पीपल स्टार्ट फजिंग द नंबर्स। फजिंग मतलब नॉन एग्जिस्टेंट नंबर्स अपनी बैलेंस शीट में ले आते हैं। एक बहुत बड़ा है और मैं नेम कर देता हूं क्योंकि वो पब्लिक है, गो मैकेनिक करके एक कंपनी है, इट हैज आई थिंक शट डाउन एंड क्लोज डाउन, एंड इट वाज रिपोर्टेड अंडर ड्यू डिलिजेंस बाय अ बिग 4 कंपनी। दे हैड स्टार्टेड फजिंग द नंबर्स, राइट, टू शो revenues and people who were not using their services, but they put it. Why did they do it? They were forced. Again, कोई भी फाउंडर, कोई भी ह्यूमन फ्रॉड नहीं करना चाहता है, बट वो इस साइकिल में फंस जाते हैं कि अरे यार, अगर अब मैं अच्छे नंबर दिखाऊंगा तो मैं वीसी से दोबारा पैसा उठा सकता हूं, पब्लिक से उठा सकता हूं, या आईपीओ करना है तब उठा सकता हूं। बट ये चीजें छुपती नहीं है। ये वी हैव एन एग्जांपल, 15 साल पहले सत्यम, विच वाज द लार्ज आईटी कंपनी इन हैदराबाद, उन्होंने करा था, राइट। बट history is very interesting. As humans, the one lesson we learn from history is we never learn, right? So history keeps repeating across everything. Wars हो गई, political tensions हो गई, सब कुछ। हम human ऐसे हैं, हम कुछ सीखते ही नहीं है, हम बहुत फनी लोग हैं, हम हर चीज को री इन्वेंट कर देते हैं। तो ये नंबर्स जब फज कर रहे हैं लोग, वो बाद में फ्रॉड के नाम पे बाहर आ जाता है, एंड eventually they will be forced to close down or they organically shut down. अब इससे बचने के लिए आपको ये यूनिट इकोनॉमिक्स पे हिस्सा देना है. I'll go more into the kind of work that we do at my company Factorial, which I represent. I'm a partner and director. We are a growth consulting firm, right? We'll get into that later. But एक जनरल ओपिनियन मैंने दिया है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब जो आपके ईयर प्रॉब्लम, और ये भी है ईयर ऑन ईयर लॉसेस, राइट. भारत पे एक कंपनी है, बड़े इंटरेस्टिंग फाउंडर रह चुके हैं उनके, बाय द वे, राइट. दैट इज अ, हाँ, अब उसको कंट्रोवर्शियल कह लीजिए, इन द न्यूज कह लीजिए, वो उनकी, मैं एग्जांपल उनकी पर्सनालिटी, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पीपल, आई लाइक टू talk about issues and debate on them, right? Let's not talk about people. So it made the highest losses across 200 top startups in India of some 4,500 crores in FY22, right? 4,500 crores just in 1 year. And founder का मैं बस यही कहूंगा that he has a lot of advice for other entrepreneurs, how to run your company, how not to run your company. अब वो कहां से पूरा हो रहा था? वो इन्वेस्टर मनी से हो रहा था. अभी तक वो कंपनी पब्लिक आईपीओ तो नहीं गई है. उनका बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी था, राइट. क्यूआर कोड और ये वो, आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो बहुत हमारी डिस्कशन के लिए वैलिड है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कुटुंब. आई डिड अ वेरी गुड रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन देम ऑन लिंक्डइन. कुटुंब, इट्स अ कम्युनिटी ऐप जो आई थिंक टेम्पल डोनेशंस वगैरह फैसिलिटेट करती है इन इंडिया ऑनलाइन. आप किसी मंदिर में जाके दान कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर लेते हैं, राइट. दे हैव बीन मैसिवली फंडेड. दे आर वैल्यूड एट ओवर 1,000 करोड़, करीब $30 मिलियन, जितना भी होता है, आई थिंक 250 करोड़ रुपए होता है. दे हैव रेज्ड 250 करोड़, 30 मिलियन. नाउ दिस माइट कम एज अ शॉक टू मी ऑल्सो. मैं 10 बार ही चेक करा आरओसी की वेबसाइट पे. FY22 का उनका रेवेन्यू
8,000 रुपए था, 8,000 रुपीज। ओके, अब एंड हाँ, तो मैंने ये पोस्ट डाल दी एंड और वो सब कुछ करा। नाउ पीपल कमेंटेड ऑन माय पोस्ट, आई हैव अ फेयरली लार्ज फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन, आई एम सुपर एक्टिव, दैट्स माय प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द होल वर्ल्ड। Now somebody said it's very wrong to blame them. The app is used by downloaded by millions of Indians and it is used millions of times a day. उसका फायदा क्या हुआ? मिलियंस ऑफ इंडियंस मिलियंस ऑफ टाइम्स अ डे। 8,000 रुपए एक स्टूडेंट की पॉकेट मनी होती है मेरे ख्याल से उससे 2 गुना 3 गुना, राइट? वो एक ऐसी चीज को ऑनलाइन लेगा जिसकी जरूरत ही नहीं थी। डोनेशन इज समथिंग, वो बहुत पर्सनल, डिवोशन, श्रद्धा के साथ की जाती है। आप किसी मंदिर जाते हैं, आपका मूड अच्छा है, आपको अच्छा लगा है, या आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, आपको लगता है आप ज्यादा दान करेंगे भगवान खुश होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज इंस्टिंक्टिव होता है। कोई 500 रुपए का दान दे सकता है, कोई 5,000 का, कोई 10 रुपए का दान देता है। आप उस चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं उसकी। आप फोर्स कर रहे हैं किसी आदमी को कि वो हर संडे, हर मंडे, हर महीने दान करे शिरडी साई बाबा को या तिरुपति या वैष्णो देवी। उसकी कोई नीड ही नहीं थी ना। अब आपने इतना पैसा लगा दिया है, 30 उसके ये बनाने के लिए 30 मिलियन 400 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी? सारे फाउंडर्स अपने आप को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, नॉट ओनली कुटुंब, हर जगह। अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो कितना डैमेज है एम्प्लॉइज का, पार्टनर्स का, वेंडर्स का, एंड इट इज वेस्टेड रिसोर्सेज, वेस्टेड मनी। उसकी जगह 10 इनोवेशन हो सकती थी, 15 इनोवेशन। तो ये कहानी है। अब फंडिंग विंटर से कैसे निकले, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट? फोकस ऑन वन वर्ड, फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स, स्टॉप गिविंग थिंग्स फॉर फ्री, स्टॉप डिस्काउंटिंग, पुट पीपल इनटू द हैबिट ऑफ पेइंग फॉर सर्विसेज। इंडियंस आर वेरी बैड पेयर्स बाय द वे। हमने कभी सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करा। हर सिटी में एक मार्केट होती है जहां आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, राइट? बट अगर अगर किसी चीज की नीड है, किसी को दवाइयां चाहिए, उसको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, वो डिस्काउंट पे इसलिए मिल रही है क्योंकि आपका मार्जिन इतना है। दवाइयों में 70-80% मार्जिन होता है इन फार्मेसीज। आप उसमें से कमाइए ना। आप अपने आप को क्यों तंग कर रहे हैं? और फिर जनता को, मनी इज मनी, अल्टीमेटली ऑल मनी इन सर्कुलेशन इज पब्लिक मनी। VC money comes from LPs, LPs get it from pension funds are owned by ordinary people, right? तो हाँ, So Amit, I just still want to understand कि where did we go wrong? For example, no founder starts a company with the view कि यार हम revenue नहीं बनाएंगे, will not make money, will never be profitable, या will just sustain on probably VC money. They Because every founder knows कि someday you will have to deliver on top of that VC money. In fact, no VC invests without a revenue plan, without a plan कि you'll generate revenue. कभी ना कभी तो कंपनी को एक्सपेक्ट करते हैं कि revenue generate करोगे. Okay, you accumulate a massive user base, तब करोगे. So where do these companies, like you mentioned, Kutum, where do all of these companies go wrong? किस point पे अगेन वो टाइम, सबका टाइम, इंडिया में स्पेसिफिक बात करूंगा, ऑल्दो ये होता तो बाहर भी है, राइट, इन मेच्योर मार्केट्स लाइक सिलिकॉन वैली ऑल्सो, बिकॉज एक तो ट्रायल एंड एरर होती है। सी, आई हैव टू गिव इट टू फाउंडर्स ऑल्सो। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि वो इनोवेशन की जरूरत है या नहीं है। ओला उबर की जरूरत नहीं थी, टैक्सियां तो पहले भी चल रही थी। स्विगी जोमैटो की कोई जरूरत नहीं थी, खाना तो लोग पहले भी खा रहे थे, रेस्टोरेंट्स पहले भी डिलीवर कर रहे थे, बट वो आइडिया स्केल हो गया एट लार्ज। तो राइट नाउ वो जो प्रॉब्लम होती है, आदमी जब शुरू करता है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी चीज को शुरू कर रहे हैं। उबर का एग्जाम्पल है, द फाउंडर ट्रेविस कैलेकनिक, right? He had a problem booking a cab in Paris while he was at a conference. He couldn't book a cab, right? And that's why he decided that he should launch. Same is with Airbnb founders, Brian and all. They had excess room capacity in their apartment and they needed to earn extra money. And friends were coming and sleeping on their couches every weekend. They decided to monetize it. Airbnb बन गया, need भी थी, solution भी अच्छा था। अब वो रॉन्ग क्यों हुए? बिकॉज आप रॉन्ग एस्टिमेट्स ले लेते हैं। सी, ग्रोथ एंड स्केल आर वेरी डिफरेंट। मैं बहुत फाउंडर्स को, मैं हफ्ते में 15 फाउंडर्स से बात करता हूं अक्रॉस स्टेजेस, वेरी वेरी मेच्योर वंस ऑल्सो। तो आप हॉकी स्टिक ग्रोथ नहीं आ सकती है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। एनी बिजनेस, एक बहुत बड़े थॉट लीडर हैं सिलिकॉन वैली में, नवल रविकांत, एंड आई फॉलो हिम, वन ऑफ द वेरी रेयर पीपल दैट आई एडमायर। नाउ ही हैज दिस स्टेटमेंट,
to become successful, profitable in any business, whether an individual or a company, takes minimum 10 years. Okay, this is historical data. 10 साल से पहले आप किसी, if you start a career at 22, 23, it will take you 10 years to move up the corporate ladder, right? Similarly in a business. So अगर आप आज 1 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है 50 करोड़ का ही करना है, आप 1 से 2 भी जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 100%. लुक एट सस्टेनेबल. गलती यही करी, सबको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है. वी आर नॉट इन इंडिया स्पेसिफिकली, हमारी ऑडियंस इंडिया की है, सो आई कीप इट इंडिया स्पेसिफिक. अमेरिका हैज 250, आई थिंक 300 मिलियन पीपल, जिसमें से 80-90% शॉप्स ऑनलाइन, डज कॉमर्स ऑनलाइन. इन चाइना इट इज 700-800 मिलियन पीपल. हमारी मार्केट ही नहीं है इतनी बड़ी, राइट? होएगी, धीरे धीरे होएगी, और ना भी हुए तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंटरनेट और ई कॉमर्स पे डिपेंड नहीं करती है. तो गलती सबने मिस कैलकुलेशन, मिस एस्टिमेशन कर दी. आप एक बिहार में, एंड आई एम नॉट डिमीनिंग बिहार, द बेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल. बिहार में कोई विलेजर है हु इज एन एग्रीकल्चर फार्मर, हाउ डू यू, वो 10 घंटे काम कर रहा है अपने फील्ड में, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम कि वो एक फ्लिपकार्ट, अमेजोन खोल के सामान ऑर्डर करेगा? उनका मॉडल होता है, उनके पास पैसे ही कम होते हैं. फार्मर्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स. उनका मॉडल होता है, वो अपनी खेती बाड़ी में इतना बिजी होते हैं, उनकी जब फसल तैयार होती है, द हार्वेस्ट सीजन एंड ऑल, they go and sell their harvest, they get a lot of cash. There are these e-chopals, I believe ITC ने चालू करे थे, ITC the major corporate, वो e-chopal में अपना अनाज भी बेच देते हैं, वहीं से अपना सामान खरीद लेते हैं, white durable goods और FMCG और everything. बात खत्म हो गई, वो 6 महीने का एक ही बार खरीद लेते हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वो अपना काम धंधा छोड़ के 10 घंटे इंस्टाग्राम पे एड्स देखेगा आपके, या फेसबुक पे एड्स देखेगा, राइट? तो ये यहां गलती हो गई सबकी कि दे थॉट कंज्यूमर्स आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आ रहे हैं तो उनको पैसा फ्री में दे दो. मैं एक 30 सेकंड या 20 सेकंड लूंगा. एक फाउंडर है आशीष हेमरजानी ऑफ अ कंपनी कॉल्ड बुक माई शो. I admire him a lot, right? Even though I have competed with him, but I still admire him. He made a statement 6 years ago at IIT Bangalore or Chennai with a very named VC called Prashant Prakash of Axel, who is an investor. He said, ये सारे, excuse for his vocabulary and mine, ये सारे jokers कर क्या रहे हैं? ये deep discounting. He said, इससे अच्छा I can go and stand outside my office with 100 rupee notes and say, look, I am giving out 100 rupee notes. लाइन लग जाएगी 5 किलोमीटर की, right? And I call it cost of customer acquisition. And सब लोग अपना डेटा भी दे देंगे, फोन नंबर भी, सब कुछ 100 रुपए फ्री में मिल गए उनको. डेटा से, प्राइवेसी से क्या लेना देना? 5 दिन के बाद मैं 50 रुपए का नोट लेके खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूंगी कॉस्ट ऑफ कस्टमर रिटेंशन, फिर से हजारों लोग आ जाएंगे. मेरे को क्या जरूरत है ये टेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू करने की और ये सब करने के लिए? इतना सारा लाखों का डेटा आ जाएगा, मैं डेटा किसी को बेच दूंगा, आप कर ले मोनेटाइज. सो द पॉइंट इज, डिस्काउंटिंग कैन नॉट वर्क, इसीलिए हम इस सिचुएशन में हैं. I think that was a very brilliant take on the current situation in the market. I think you've been an entrepreneur, you have been an investor, you have been an advisor, and you have been building businesses for some time now, and now you are doing factorial. I want to understand, how do you transition from, say, building businesses to what your company is doing today, and what does factorial do? So it's very interesting and very unconventional. I am an unconventional person by choice and by habits, or how I have been doing things generally. I was running an export business starting in the late 90s, helping a family member, and then I joined it. I had cracked a sale deal at 19 for about $120,000. $1,20,000 उन दिनों बहुत बड़ा अमाउंट था. 30-40 रुपए का डॉलर था, फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट था. आई बिलोंग टू अ मल्टी जनरेशनल बिजनेस फैमिली, grown up across countries, cultures. I've grown up in Africa, studied in England, and so forth. Ran that business successfully for 15 to 18 years, at which point I was based outside India for various points in time. 2014, I made the move back after living in the US for 7-8 years. I thought it was a permanent thing, but recession and many factors contributed in me making the move back. Also buoyed by the whole startup ecosystem in India.
I had missed the technology boat earlier in my life. Uh, Personally, I'm a technology enthusiast, so I wanted, a slice of the pie somehow. And as luck would have it, helping a friend's friend, I landed up in Hyderabad. Helping a founder who was running a technology business in the event marketing and ticketing space called Mera Events. It still exists. Okay. Now, given my background coming from fundamental, having fundamentals in place of running a business, basics, never exposed to anything, but I knew how to run a business or scale a business, which we had done. And event business was something I knew because I had attended maybe 300 odd events by that point. Because the primary way of marketing my own business earlier, the export business, was through offline events. I am talking pre-e-commerce, pre-internet era. So we had no Google to search. In fact, that is a very big thing. आजकल Google generation है, काम ही नहीं करना पड़ता, सब कुछ Google पे टाइप करो, 1 मिनट में आ जाता है, राइट? वो भी एक रीजन है, ये सारे फाउंडर्स को सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, राइट? रिसर्च ही नहीं करनी पड़ती, जैसे हिंदी में कहते हैं आपको पैर ही नहीं घिसने पड़ते, राइट? मेरे को 6 महीने लगते थे एक क्लाइंट लाने में 2001 में, राइट? अब आपके पास 10,000 क्लाइंट्स की लिस्ट 2 मिनट में आ जाती है, फिर भी पैसे नहीं बना रहे हैं लोग तो so I got involved in that technology company. We scaled up very rapidly due to luck, chance, some basic fundamentals. We were doing top line revenues in 3-figure crores. I wouldn't put the exact figure, but still. And somehow I started, helping other entrepreneurs. It was event business, so I was attending conferences, seminars, live shows every day. Like it was such an existence. एक reason मेरा ये भी था वापस आने के लिए. I wanted a temporary retirement life in Goa, which never happened. And I ended up taking 15 flights a week. I'm not boasting. मेरी life ऐसी हो गई थी. You know, breakfast in Goa, lunch in Hyderabad, dinner in Mumbai, and this continued for almost a year, right? I lived out of a suitcase and in hotels because I was enjoying what I do. Nobody forced me to do it, right? I was quite happy doing everything. Now, in raising capital for that company itself, I started getting exposed to the VC ecosystem and interacted with a lot of investors and VCs. We successfully raised capital, but as again luck would have it, and I am a networker by the way, by habit, right? I like to help people. I like to connect dots without a reason, and I'm a relationship builder, right? I mean, very early in my life, the $120,000 deal that I had done, and the one I had did it with a very good CEO from America who ran thousands of stores, some 13,000 stores they were selling. He had told me very early in life, and this is very important, maybe it could be a quote of the show: business is about people. Okay, and I was very happy. Business is about people. So he said, hang on, wait, in his American accent, right? He said, no, business is about people and the relationships between them, right? Any business. Most billion-dollar deals are signed on a Sunday morning on the golf course because of the relationship between people, right? So now I am a people's person. I started meeting lots of founders, VCs, everybody, and somewhat by design default, it became a pro bono advisory role where I was just helping people, which I still do, right? I believe in something called pay it forward, right? Pay it forward. Somebody helped me in life, I help people. But I took it professional, started an incubator in 2016 out of Singapore and Mumbai, more like a company builder, and so forth. The journey continued. अब 8-10 साल हो गए हैं. I like, if I'm doing a business, I've ran multiple businesses now. I also co-founded other 3-4 companies in the incubator. The model was such that we would co-found the companies and run it till we pass it on an autopilot stage to the founder. But now I like doing what I do in terms of, because I get more exposure to more sectors, more founders, more industries. So I'm happy doing advisory because of my experience and a certain level of expertise that I have built. So that got me involved, and technology again. All businesses are technology businesses in the startup space. So one thing led to the other, and now I am at we run a boutique management consulting firm called Factorial. We are not typically investment bankers. We are not consultants. I mean,
For the lack of a better word, we have said, we are positioned as boutique management consultants, but we work with uh, growth stage companies who have essentially found the product market fit and are revenue generating. Those are benchmarks, right? Uh, and we help them across business functions, be it sales, marketing, finance, HR, anything, leadership, mentoring, coaching. And these are high revenue growth stage companies ranging from a 10 crore to a 300 crore company. We work with very limited number of companies. And again, our focus has always been on unit economics. Fortunately, all our companies, 8 companies in our portfolio, are EBITDA positive. So, and one part of our services, of course, is to help founders raise capital. We'll get onto that later in terms of uh, what are the basics in terms of fundraising. So yeah, essentially, one thing led to the other. I got involved from a family businessman to running, operating, and now advising startup technology startups. So you have been advising multiple startups, be it on the growth side, be it on the fundraise side. I want to understand the checklist that you would include for a good investment. So see, there is Pritesh. There is no hard and fast rule, right? Every sector is different. Every problem is different. But still, now see the fundamentals of why anybody would start up and require VC or external capital are we follow the pattern of problem. Are you solving a problem, right? Whether from a personal pain point, जैसा मैंने Airbnb और Uber का मॉडल बताया, उनका पर्सनल पेन पॉइंट था और उनको लगा हम अकेले नहीं हो सकते, दे मस्ट बी मिलियंस ऑफ पीपल विद solution, problem ka solution. Is that solution scalable? Yes, every solution is scalable today because of technology, right? Technology enables solutions to be scalable. So, problem solution, then most important, market size. Is there a market? इंडिया में 1.4, मैं 4 बार वो एग्जाम्पल दे चुका हूँ, 1.4 बिलियन पीपल हैं. इसका मतलब नहीं कि वो सारे के सारे इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, राइट? यू नो, दैट्स अ फैलेसी, दैट्स द बिगेस्ट फैलेसी. वो हमारा अगेन वी लव एक्रोनिम्स. तो there is something called a TAM, SAM, and SOM, total addressable market. SOM, service, comes last. SAM, serviceable addressable market. कितनी मार्केट आप एड्रेस कर रहे हैं? 1.4 बिलियन पीपल है इंडिया में. आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन हैं? 100 मिलियन लोग हैं. देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉम, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. 100 मिलियन में से कितने हैं जो आपको मिल सकते हैं, राइट? आप कल को एक मोबाइल फोन कंपनी लॉन्च कर लीजिए. ऑलरेडी हजारों ब्रांड है मोबाइल फोन्स में ग्लोबली. सो आप कितने को टारगेट कर रहे हैं और क्यों आपके पास आएंगे, राइट? Now we've gone through all this. USPs, your solution has to have you, not necessarily कि आपको कोई rocket science problem solve करनी है, जरूरी भी नहीं है. Many existing problems have many services and space for more providers, right? एक पिज्जा पाई है, अगर कोई प्रॉब्लम, सब लोगों को एक स्लाइस मिल सकता है उसका, राइट? जरूरी नहीं है आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन के हिसाब से ही चले. ये टैक्सी कैब स्पेस जो है, अभी भी उसमें इतना कुछ हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओला और उबर ही कर रहे हैं उसको, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन डू इट. सो यूएसपी होना बहुत जरूरी है. यूएसपी कैन कम फ्रॉम योर टेक्नोलॉजीज, यूएसपी कैन कम फ्रॉम योर कस्टमर एक्सपीरियंस. Customer experience is the most important thing. That what customer experience are you giving? That is how you get repeat customers, and you don't need to discount them to buy. You don't need to buy your customers. You buy loyalty, right? Not customers uh, through deep discounting. तो आई थिंक ये फंडामेंटल चेकलिस्ट, प्रॉब्लम सोल्यूशन, यूएसपी, मोट्स. मोट इज समथिंग, वो पुराने किलों के बाद जो मोट बनता था पानी का, वो बना देते थे वो. तो बिजनेस को भी एक मोट होना चाहिए. द एंट्री बैरियर दैट वी कॉल्ड. एंट्री बैरियर मींस कि बाकी लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते. ऑल्दो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कॉपी नहीं हो सकती है, अनलेस यू आर प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रेडमार्क और एन आईपी और समथिंग. वो भी डिफेंसिबल नहीं होता है इंडिया में, राइट? वी हैव द कोविड एग्जांपल. जूम, हम लोग सब जूम कॉल्स पे गए. 5-7 दिन बाद इंडिया में बहुत बड़ा एक टेलीकॉम कंपनी है, उसने कॉपी पेस्ट कर लिया पूरा जूम का प्लेटफॉर्म, राइट?
सो इट इज नॉट डिफेंसिबल, बट स्टिल आपका यूएसपी आपकी प्रोडक्ट, सॉल्यूशन और कस्टमर बेस से आएगा. सो ये एक चेकलिस्ट होती है. प्लस प्रोडक्ट मार्केट फिट, आपने एमवीपी करा है एक मिनिमली वायबल प्रोडक्ट एक छोटे से यूजर बेस में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर बेस हो. फ्रेंड्स फैमिली डज नॉट मैटर. बहुत लोगों की आदत होती है फ्रेंड्स फैमिली को अपनी प्रोडक्ट सॉल्यूशन दिखाते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं, नेचुरली दे आर योर सपोर्टर्स, वो तो खुश होंगे ही, बट वो वैलिडेट नहीं करता है आपके प्रोडक्ट को. यू नीड टू हैव एक्चुअल थर्ड पार्टी यूजर्स विच आर नॉट नोन टू यू, विच आर part of a large subset of users, right? Not necessarily they are paying you, but at least they find utility and they stick with you, and then you have to monetize. तो ये एक चेकलिस्ट होती है और उसमें पता लग जाता है कि वो सॉल्यूशन स्केलेबल है, पैसा बनाने लायक है या नहीं है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, नॉट विद माय कंपनीज जनरली, राइट. सब लोग फोमो इन्वेस्टिंग जो आजकल फिर से हो रहा है, जैसे मैंने बताया 2000 में डॉट कॉम बस्ट हुआ, हर कंपनी के आगे आप डॉट कॉम लगा दीजिए. अब क्या हो रहा है, हर कंपनी डॉट ए आई लगा रही है अपने नाम के आगे, राइट. वो एक्सेल शीट पे कुछ कर रहे हैं, एमएल एंड डेटाबेस मैच मेकिंग, वो बोल देंगे एल्गोरिदम बना लिया, वो सोचेंगे ये एआई है, राइट. सो ये एक बेसिक A चेकलिस्ट. lot of that AI work is getting done manually as well, right? Right, right. It is. Ultimately, AI is nothing but data that we humans generate and feed into the systems. AI इंजन तभी चलता है ना जब डेटा हम देते हैं, उसका अपना दिमाग तो है ही नहीं है, राइट. But a lot many times what's happening is that companies are actually fundraising to build those AI systems, right? That they are claiming at maybe at an early stage. So what do you think, since you have been advising a lot of companies in fundraising also, what do you think is an ideal condition? Do you think is the ideal stage when a company should go for fundraising? Very important point, Pritesh. Not every business is VC fundable and doesn't need to be VC fundable. और ये assessment founders को खुद ही कर लेनी चाहिए that if they have managed to raise seed capital, जिसको हम बीज कहते हैं, पौधे का बीज होता है, वैसे ही सीड कैपिटल होती है. अगर आपको सीड कैपिटल या वीसी में उसको प्री सीड भी बोल देते हैं हम, वो बीज कैपिटल मिल गई है, हाउ एवर यू हैव डन इट, फ्रेंड्स, फैमिली, angels, your own savings if you are transitioning from a service or an employment role, or even if you are a student, there are many grants and incubators and government support. Startup India program gives you so much of money to start, right? So much as in at least initial capital. Every state in India has these startup programs. There are, I know, at least 120 incubators in India who give you all that. वो सब आपने कर लिया, उसके बाद आपने इनोवेट कर लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है, सॉल्यूशन बना लिए है, फिर आपको देखना है कि वो स्केलेबल है या नहीं. ये काम आपको खुद करना चाहिए rather than depending on advisors like me or investors, right? आप जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं, you have to be sure shot कि मुझे पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए. You should need money for scaling up, for your R&D, for your human resource, and all that will result in more revenues. You should not need money for acquiring customers. That is number one red flag for me and also a criteria for me. अगर आपको 10 रुपए की चीज 500 रुपए खर्च करके बेचनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, राइट. मैं आज की बात कर रहा हूं, अब हम इस स्टेज में आ गए हैं. कस्टमर शुड कम ऑर्गेनिकली. इट विल बी वेरी पेनफुल बट दे विल कम ऑर्गेनिकली. 10 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, लेट देम कम ऑर्गेनिकली. उस प्रोसेस में 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं. प्लीज वेट, you have to go through that painful process. बच्चा जब चलना सीखता है, राइट, गिरता है बार बार. अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हमें उसको चलना सिखा दिया वो अगले दिन भागने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना. आप किसी भी, आपको मैराथन भी भागना है, यू हैव टू पेस योर सेल्फ इन द मैराथन. यू कैन नॉट कीप रनिंग एक्सपोनेंशियली. सो ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए बोलते हैं, एक रीजन है. अगर वो स्केलेबल बिजनेस है, आप सोचते हैं आज मेरे पास 10 मिलियन यूजर हैं, मैं ओवर कैपेसिटी हूं, मेरे 10 लोग सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, बट कुछ पैसा मिलकर मैं वो 10 लोग अपना बिजनेस डबल कर सकता हूं, ट्रिपल कर सकता हूं या बढ़ा सकता हूं, सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, देन इट इज वीसी फंडेबल बिजनेस. देन यू गो टू VCs, एंजल्स, फंड्स. तब तक आपको खुद बूटस्ट्रैप करना चाहिए. बूटस्ट्रैप कंपनीज आर द बेस्ट बिजनेसेस, बाय द वे. Historically, globally, in India, we have thousands of family run businesses
which don't need any capital. We have our own startups. They are not startups, but companies like Zoho, which is the original OG of the ecosystem. The amount of money they make in revenue, profit तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहाँ है, या प्रॉफिट ही आप ले लो उनका, प्रॉफिट इतना है जितना कुछ कंपनियों की वैल्यूएशन है आज की डेट में, राइट? तो इफ जोहो कैन डू इट, राइट, इफ जीरोधा कैन डू इट, वो तो अलग ही स्टोरी है. जीरोधा फाउंडर्स पे ईच अदर मैसिव सैलरीज, दे शुड, उनका अपना पैसा है ना, राइट? दे हैव अ राइट. इफ यू एंजॉयड दिस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड क्विक हाई भेजो अपने थॉट्स के साथ एंड द गेस्ट यू वांट. एंड आपको हमारे कम्युनिटी के लिंक्स मिल जाएंगे नोट्स में. यू शुड ज्वाइन फॉर ब्रिलियंट नेटवर्किंग एंड पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इवेंट्स एंड फॉर कनेक्टिंग विद द पॉडकास्ट गेस्ट. नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं दोबारा.